Doctor, can cancer come back after a successful surgery? Now, this is a very pertinent and a frequently asked question in our OPDs. And unfortunately, answer to this is yes. What do we do in a cancer surgery? So, आपका जो भी organ cancer का involved होता है, in surgery we remove that part along with a safety margin. And we also remove some lymphovascular tissues along with it, जिसमें कैंसर के स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं. Sometimes what happens is ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं, वेरी माइन्यूट, वी कांट इवन सी देम विद योर नेकेड आइज एंड समटाइम्स इवन स्कैन्स कांट पिक देम. So some of these cells can spread beyond this area of surgery. And अगर ये cells body में रह जाते हैं, so they can grow over time and cause cancers to relapse. Now cancer की recurrence 3 टाइप की होती है. एक होती है local recurrence, जहाँ पे आपने सर्जरी की है, जहाँ से ट्यूमर रिमूव किया है, वहीं पे कैंसर वापस आ गया. सेकेंड इज नोडल रिकरेंस, जो लिम्फ नोड्स होते हैं अगर वो कुछ छूट गए तो वहाँ पे कैंसर वापस आ गया. एंड थर्ड इज कॉल्ड अ डिस्टेंट रिकरेंस, दैट इज आपने कोलन में कैंसर ऑपरेट किया था लेकिन इट कम्स बैक इन योर लिवर और योर लंग्स. नाउ व्हाई डज इट हैपन? इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन 4 factors. First is the stage of the cancer at the time of diagnosis and treatment. Now this is the most important factor. So for example, if I detect a cancer at stage 1 and operate it, the chances of it coming back would be less than 2 to 3%. Whereas if I detect the cancer in stage 3 and operate, the chances of it coming back would be somewhere around 30% and above. Secondly is कि cancer किस organ का है. So some of the cancers are better as compared to others. Again, the example would be a pancreatic cancer or a gallbladder cancer. They have very high recurrence rates despite whatever you do. Whereas colon cancer is one of our better cancers. The recurrence rates are fairly low. Third thing होती है biology of the disease. Now, the same cancer in an organ behave differently. So sometimes cancers are much more indolent and sometimes they are very aggressive in their behavior, which you call as biology of the cancer. और lastly and most importantly is कि सर्जरी के बाद पेशेंट्स को और क्या थेरेपीज दी गई हैं या उसकी क्या थेरेपीज वो ले पाया है. से कई बार कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी के बाद रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, और क्या पेशेंट वो सेफली ले पाया है कि नहीं. इन चारों के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कैंसर कमिंग बैक. नाउ अगर कैंसर वापस आ भी जाता है तो इट्स नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर to understand is कि अगर आपकी सक्सेसफुल सर्जरी हो भी गई है, that's not the end of your treatment. A regular follow-up, 3 monthly follow-up for at least 2 years and 6 monthly follow-up for subsequent 3 years, that is total of 5 years, is very, very important. You have to be in touch with your oncologist. Be in constant touch, get all the tests which are being recommended to you by oncologist. उनको कराते रहिए. इससे एक चीज़ ये हो जाती है कि आपको reassurance मिलती रहती है कि yes, there is no recurrence of disease, and God forbid अगर disease वापस आती है, you can pick up at the earliest and treat it so that we can just nip it in the bud. So don't worry if you have a cancer or you had a cancer, please follow it up with your oncologist and follow their advice. Be happy, be healthy. Thank you.